Okay, hello students, good afternoon. Is my screen is visible to all? Yes, sir. Okay. So I welcome on behalf of my college, Guru Govind Singh Engineering College and Research Center, Nasik. Myself, Deepak Chavan, working as assistant professor in mechanical department. Okay. So let's in yesterday's session you studied one optimization tool that Professor Dr. Achaiya sir has explained you. And before that day, that on the first day, our staff, Mr. Vishwesh Kathe, that explain you how the 3D printing or rapid RP process is going to be work. So you might aware that what is the meaning of SLS, STL file, and what is the need to convert that CAD file into this format. Okay. So today we directly jump on the applications because the applications are we cannot restrict the application of 3D printing or the rapid RP processes to the one or two areas. It's depends on the user where the user is want to apply the applications or where the user is want to use the this particular RP processes as per its requirement. So on my screen, you see one of the printer where some sculptures are there. Sculptures are there. That is one monkey is shown. That one owl is shown there. One statue is that is over there. One frog is over there. So there is no limitation. Limitation is the sky for this particular. Sky is the limit. Okay, you can create any kind of object as per your requirement. Okay, so let me discuss in brief or how the 3D printing is the market or the peoples are going to apply for their convenience or as per their requirements. Okay, so this is the application that where we are going to use. Okay, the medical field, the aerospace industry, manufacturing. Okay, it's not restricted to any kind of area. So first, let me show you one image where how the user or how the industry is imparted or how the industry is going to be use the 3D printing applications, RP applications as per their required area. So my screen is visible, Uday sir, this particular field. Yes, sir. Okay. So okay, if we consider this particular, so motor vehicles on the left hand side, the color picture shows where the 31.7% is used by the automotive industry, that is the motor vehicles. Okay, then consumer product 18.4%. This is all over the surveys taken by the in all over world where the 3D printing or RP processes is going to be applied. Then you can see that this red and light areas, red light or orange areas where they have to shown that in government or in military applications what is the share of that particular RP processes is near about 7.7 and 5.5%. Okay, and again in medical industries, in medical field. Okay, so medical field, if you consider medical field, that near about 11.2% is used by the medical field. Now you might be surprised that in how that in medical field this particular processes, RP processes or particularly 3D printing processes is going to be used. Okay, why I said at every time the 3D printing, because the RP processes are might be or somewhere is restricted to the mechanical or in productions area, because the material or the product that we have to manufacture in mechanical or production industry are material required for that are just like your metal. Okay, cast iron, mild steel, depends. But other than that, other users are not restricted to the material because they just want to what they satisfy their requirement. Like suppose the a gold manufacturer or a jeweler is use the gold as a material to manufacture or to produce its jewelry. Okay, its ornament. Okay, now in medical field they required a soft material like a PVC or less than that, whose strength is whose density is less but the strength is more. So to use that material there is no restrictions kind of those 3D printing is what we say is usually easily available for them, and for that no any kind of such a
rocket science or rocket science knowledge is required for the users of industry like medical or consumer products. Okay, day by day use products likewise. So this is the some graph which shown that how the 3D printing or RP processes are widely used all Excuse over. me, sir. Hello. Yes. Hello, sir. We are not able to see the new screen which you are showing. Okay, sorry. Okay, I share my entire screen. So now you are visible to this. It's now presenting No, sir. now. Yes. Now it's visible. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Thank you, sir. So this is the case where the RP processes are used by share. Now this is somewhat the not a latest that we say latest numbers, but it what somewhat same replications of the numbers that are in current use. That is, it might be 31 changes to 32 or 33 likewise. So it depends. Okay. Now again, where how the where the professionals are used. Now professional means what the now we and you are the engineers that we call as the professionals. That how the professionals are you going to be used or they are uh, their favorite process that to produce some kind of their requirement that is for prototyping for productions. As you can see over here, okay. So if you see over here, the prototyping process is take a 55% share, near about 55% share, and production and other are very less, far much away from that this 55%. So for prototyping, so if you have to analyze any kind of thing, so not a prototyping is not limited to the scale also nowadays. Okay, so prototyping is of any kind of scale, that is 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3. So before this, what happened if you have to create a bridge? So for the bridge or suppose a house, okay, so for the house we have to develop a prototype in a very small scale, that is 1 as to 10, 1 as to 20, 1 as to 50 likewise. But nowadays with the help of this 3D printing, so prototyping is not limited to the scale. We can create the actual prototyping, but the material is different that we're going to use for a prototype is actually obviously it's different, okay, than the actual one. So it's the somewhat share that marketing samples, art, okay, education and as a hobby also. Not in India, but out of the India in foreign countries. The just like we have in India that we have the 2D printer that is on what we print on the paper that we call as a 2D printing. So many of the people or many of the users have the 2D printing at their home also. But in the foreign countries, the small kids that going to use a 3D printing to produce their uh, what school projects also at their home. So that is the for education and for the hobby purpose they also they going to use. Now this is the 3D printing applications and 3D printing users by department. So for again the same, this slides shown the same case. But here on the right hand side, what is the shown that R&D, research and development, design, production, technical engineering, methods, department and maintenance. So you can see if you have the knowledge, vast knowledge or very at the minute level, if you have the knowledge of 3D printing. So again, I say 3D printing is not a rocket science, but if you have the knowledge of 3D printing, then you can produce any kind of thing, and it is applicable to at requirement of the user market industry. So this is somewhat the brief of the 3D printing applications. Now we see again it by one app with the examples. So medical field, if the one injured skull is shown over here in the next figure. So this man has some, suppose it having some, he having some accident, and in accident his left hand side skull is maybe may get damaged. So with the help of 3D printing, so just we have to take that dimensions, accurate dimension of what its left skull.
and just create a CAD model and convert that CAD model to the STL file. Just after this, you got the idea that how to convert CAD model to STL file, and we have to produce that it into the what we say, the 3D printing, that is with the help of software, that Cura software that Mr. Kudare sir has suggest you. So again, in that same, you are able to produce this kind of sculpture or the skull of this human. Okay, you can see the how he is happy after fixing this on his head. So this is one of the application that where we or the peoples or professionals or medical industry is going to apply the RP processes. Again, this is again one of the next applications, that if these two childs are connected to each other with at this point, at this area that is their heads. So after surgery, we can again uh, create the particular thing what they require after the medical surgery. Okay, I didn't exactly know how they required that, or what particular area they required to manufacture either skull or their brains or their nerves, or what they require after surgery. But you can create any kind of thing with the help of 3D printing RP processes. That bioprinter, again 3D printing, that we are used as a bioprinters also. Okay, so that particulars is okay. Here it's shown over here what they exactly produce with the help of that 3D bioprinters. Okay, that cells, biological activity, molecules. Okay, so this is the example before and after. Okay, here you can produce a teeth also. Okay, nowadays, if you go to the dentist and he take the dimensions of your 3D, that your teeth, what they want to fix, so they just take the dimension. Many of you observe also or not, I don't think, but they just take the dimension of your teeth, what they have to implant in your mouth, and just give the dimension to the this kind of developers. So accurate the time, if we give the dimensions accuracy to the CAD model, and after CAD model to the STL file, then accurately the 3D printing has a accurate process. So it can manufacture same as what the dimensions is required by this particular man. Okay, so might be there his teeth also is broken, or some kind of what we say disease also he is having. 3D printing in drugs industry also. Okay, special kind of drugs maybe are the industries are going to be produced. So at that time, you can see over here. Okay, so this kind of minute or at a micro level, we produce the object with the help of 3D printing. The outer shells. Okay, again, as in first lecture, Kate sir told you that this is not a for mass production, but we can use it is as per the requirement of the user. Okay, so this medicine may have the very limited kind of usage or very limited kind of applications to one particular or two or three number of patients, but we can produce this kind of drugs with the help of 3D printing, because it takes very less time and it's cost effective in automotive industry. So automotive industry is nowadays they are going to use this 3D printing or RP processes in vast amount. Okay, these are some example. This car is a totally from the engine part, the piston in a ring, then crankshaft, camshaft, each and every part of this car is manufactured and produced by 3D printing. The glass also, that whatever except this man. Okay, except this man, each and everything that you are seeing in this picture is produced with the help of 3D printing. Okay, this glass also. Okay, you see the shape. It's not a just kind of. It's very aerodynamic shape. Okay, the shape is also matter in automotive industry. So you can see the finishing of this particular vehicle that this man has driven. Okay, 3D printed babies. Obviously, they are the not living, non-livings.
but we can produce baby dolls or just babies or dolls or what is the toys that required in the toys industry. Okay, now toys industry is the very big uh, what we say very big area where we apply the knowledge of 3D printings or RP processes. Okay, see the face that with the help of 3D printing is produced of this particular toy. That surface finishing and the expressions on his face. Okay, art. Okay, these are some examples. 3D printed guns. Now jet engine, again what I shown before this, the image of a vehicle where all the parts of that vehicle are manufactured with the help of 3D printer, just like this jet engine. Again, this jet engine is a good example of 3D printing or RP processes. The gear, the wheels. You see in foreign countries, because of the flood situations or because of the what we say the storms are there, the number of storms are because of the peoples are affected by using number of storms. Okay, so they didn't build the way just homes with the help of our cement. Okay, they try to build up their home with a very user friendly material and which is available in at very low cost as compared to cement. So this is the use of 3D printing. Okay, they built a home directly. You can see the scale of this home particular and this man on the right hand side. So you can observe or you can imagine how much in the large quantity they in foreign countries they are going to use this particular home with the help of 3D printing. Okay, in China, one bridge is there. In 2019 or 2018, it is open to the people. The bridge is having the length approximately near about, I think, 100 meters, and it plays at the height of near about 700 to 800 meter from the ground surface. So bridge is totally manufactured. The part each part, the joints, that what we say, nuts, screw, bolt, threads, strings, the base part, each and every part is manufactured and developed by that 3D printer in China. Okay, so there is one news in I heard in the morning that the Tesla, you all are aware know that what is the Tesla and how what is the they're working. Okay, Tesla looks to rapid growth 3D printing manufacturing. So they want to develop or directly one plant where all the parts of their car or their products is going to develop by 3D printing. Okay, they shown the vacancy also there. Okay, what the key responsibilities, what is the requirement, and what desired skill and qualification is required for them in this plant. Okay, you can just go to this particular site and you observe that how this particular industry is now growing today. That if you see key responsibilities, perform basic functions, just see the basic functions. Okay, and what is the requirement? Okay, what see the requirement? Passionate about rapid prototyping. This is not a very technical field or where we can lagging. Okay, we all are passionate about our work. So passion is not that where we are lagging. So must be self-motivated, meticulous attention to detail. Okay, so ये हम ऐसा नहीं कि हम ये कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ what we have the knowledge of 3D printing, that how the process is going to be work. ओके, सो अब अगर आप इसे देखते हो कि ये बहुत सिंपल है तो ऐसा भी नहीं है, और अगर आप किसी और एंगल से देखते हो कि ये दिस इज वेरी क्रिटिकल टास्क एंड वी कैन नॉट एबल टू परफॉर्म और वी कैन नॉट वर्क ऑन दिस, सो अगेन इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, flexible ability, okay, desired skill and qualification, so you can go that if you want to apply, so you can directly go to particular that site and you can apply also. I think the link is not given over here. Okay, and what the desired skill, obviously one kind of CAD software knowledge
is also is having with you, that is CATIA, SolidWorks, ProE, or other CAD manipulation software. 2-year degree of technical and plus. So this is the requirement. You can see the applications where the 3D printing is directly required for the your job. So you can easily apply, you can easily make a career in this particular industry, and you can write your future as no limit is there. Okay, so this is from my side. Okay, so any doubt, any kind of question? So this is very simple one, but still if you have any kind of doubt, you can ask. Uday sir? हेलो Yes, any questions? सर अगर मेरे पास कटिया में एक मॉडल है तो उसको मैं 3D प्रिंटर में कैसे इनपुट करूँ? So Yes, that तुम्हें वो कन्वर्ट करना पड़ता है, that we are going to see in this lecture, next lecture. so next lecture is on the same topic that you asked, Mr. Vikas. You will get your answer within that lecture. Within 2 to 5 minutes, you are getting the hands-on practice that how we are operating this particular to produce a directly a 3D object, okay, three-dimensional, having the dimensions. You can see it particular, you can feel it. So next section is very important and very useful to you peoples. And it is on the just small on the scale, but its application same similar. Whether you purchase a high quality printer or whether you have the large scale printers, but the applications what we are going to show on you today, it's the same, remains same. The process remains same, the parameters remain same. Only the industry, what the industry is going to use or where it was going to use is the same on the same scale. Okay. जो हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है उसका सिर्फ साइज कम है, बाकी जो थिंग्स है, जो पैरामीटर्स है वो हमेशा सेम ही रहेंगे, थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस होगा, 90-80% तो वो सेम ही रहेगा. सो टाइप ऑफ मटेरियल इज डिपेंड्स. ओके, ह्यूमन बॉडी में टाइप ऑफ मटेरियल, उधर से आपको पता है टाइप ऑफ मटेरियल कौन सा होगा उसमें ह्यूमन Yes, बॉडी? there are some biometric 3D printers are available in the market. That is, one is available in the IIT Bombay and one is available at the VNIT Nagpur. So the material is the tissues. The tissue material which is present in our body, the similar kind of material is being used, which is available with that printer. Okay, okay. So tissue material is there. Again for the teeth, I think tissue material is we are going to use, but it depends again. So thanks everyone to listen me, and I would like to hand over next session to Kudore sir. It's a hands-on session. Okay, can able to see particularly how the 3D printing is actually going to print the object. Thank you, sir. Hello everyone, I am Mr. Pritam Kudare. I am assistant professor at Guru Gobind Singh College of Engineering. Now I am going to take a session on hands-on training on the Cura software. So basically there are the many software available in the market which can do the 3D printing process. So what that process generally is, because as the 3D printer is nothing but the machine which is operated on the coding. As all of you know, the NC or CNC machine. So in CNC machine, the machine is operated on G code and M code. So 3D printer is a similar kind of machine. It is also work on G code and M code. So basically M code are not always be present. So most are the G code. So G codes are used for the traveling of a tool. In the CNC machine, here we have a tool is nothing but the nozzle.
if we consider the FDM machine, most basic machine. So in FDM, nozzle is act as a tool. So nozzle movement is being defined by a G code. So it is not easy for us to write that G code and create all the program, because in each layer, so we already know this is a layer by layer process. So in each layer, we have to define a path by which our tool should move. That path is being generated by the G code. That G code is being generated by the various software. So out of those software, we are going to use the Cura software. In most of the latest CAD modeling software, they also provide the interface for the 3D printing. So it is easy for us to use the directly same that particular model, but as it is not basically made for the 3D printing, it may lack some options. So if you are having a CATIA or Creo software, there is an option to directly 3D print that particular model. But as the if you consider a Creo software, so it is basically made for the solid modeling purpose. So it is very much user friendly if we are performing a solid modeling on the Creo software. But if we are going to perform a 3D printing over there, so it will provide you the program to do the 3D printing, but the option or command you are having or control you are having over that model will be relatively less. So we should always go for the specific software which are been designed for the particular purpose itself. So it will give you the more control over the process. So first of all, we are going to pick a simple model. So in the Creo software, already I have already created one model. I will just open it. Okay, so this is the model I have been choose, which we are going to see in this hands-on session. I have already shared you a link for downloading the Cura software. So if anyone has already downloaded it, can do it simultaneously. Now basically over here, what I have considered is I have some parts, hanging parts in the space, plus this is an assembly. So if you see, this part is been attached directly to the inner shaft, and that inner shaft is already placed between these two linking. So if you consider any machining process, it is not possible to manufacture assembly directly. But in 3D printing, it is possible that you can directly manufacture the any assembly. So as you consider, there is some gap between the shaft and the surface. So same gap can be generated in a 3D printer itself. It is going to use the support material in between to maintain that gap, and that support material can be removed easily by using a small amount of force, and that support will break and we can take it out. So as it is, you can show it is having a larger diameter. So if we do it by conventional method, we cannot put it likewise, or we have to make it in the two parts and then we have to assemble it. So it is the advantage of 3D printing. That's why I have chosen this component. Now, first of all, when you use the Cura software, it required the file format that is known as the stereolithography file format, or we can say the .stl file is what we required. So if we save this particular file in a Creo software, its format is default format is the .prt format. So if we just see over here, file save as, you can see at the bottom that format of the Creo software is .prt format, or some other software has the different file formatting system also. So for this, if you want to save it, we are going to make it as a save as. There are n number of options where in which format we can save this particular file. So here you have to select the stereolithography file, or you can say .stl file format. So this is the format which is being used for the 3D printing. So I will just click on OK. Yes. So you can see over here the file which we are having is converted into some triangles or some triangular shape. It is been converted.
So this is nothing but the stereolithography format. So in stereolithography, all the shapes are in a triangular form and those triangles are connected to each other. So in this file format, only the boundary condition information is being stored. Now this particular file we are going to use to print it in the Cura software. So if you see this Creo software, there is also option to print, and where is option order a 3D print or prepare for a 3D printing. So it is possible to do it here itself, but we are going to use the Cura software. So I will just open it. I have already installed the Cura software. It is by the name Ultimaker Cura 4.7. So it is an open source software. Open source software means you can download it freely. You can also modify it as per your printer. If you are creating your own printer and you want to modify it little bit to get the proper programming, that also you can do. So I'm going to open the Cura 4.7.1, which is the latest version available in the market. So basically, when you start the software, you have to first of all set the software for your printer. So I have already done it. So I will just show a demo. To add a printer, this kind of screen will appear over here. So there are n number of 3D printer by the various manufacturer are available right now in the market. So most of the 3D printer are already added over here. So you can simply select which 3D printer. In our college we have the 3D printer by the brand Anet, and our model is the A8 Anet A8 model which we have. So likewise, if you are having a different kind of model with you, you can just select it and take it as it is. So all the setting for the printer are already done if you have that particular right model you have selected. But if the not right model is available with you, you can select any particular model for the general purpose which is matching your properties, and then you have to click on add. When you add it, it will show it over here. That is, I have selected Anet A8 software as a 3D printer. But if you want some changes to be made, so you can go to the manage printers. In manage printer, we have to select which properties of the printer we have to modify, and then you have to go to the machine settings. So in machine settings, all the parameter related to printer is given over here. So first XYZ is nothing but the size of your bed or size of the part which you can print over that printer. So unit system are in mm. So first is X and Y shows the bed. बेड जो जहां पे हम प्रिंट करने वाले हैं उस बेड के डायमेंशन वो शो करता है एक्स एंड वाई डायरेक्शन में. तो वो जो आपकी साइज होगी वो साइज आपको डिफाइन करनी है. फॉर इन अवर केस वी हैव द प्रिंटर विथ 220 mm by 220 mm in the size of the bed that you have to define. Then z is nothing but the height or depth we can say. So वो कितना नीचे जा सकता है और कितने हाइट का पार्ट हम वहां पे बिल्ड कर सकते हैं, that size is given over here. That is a z height that you have to give. Then shape of the plate. तो शेप ऑफ द प्लेट देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल, रेक्टेंगुलर एंड इलिप्टिकल. सो आपके प्रिंटर के जो शेप होगा उस हिसाब से हम वहां पे सिलेक्ट करने वाले हैं. इन आवर केस वी हैव द रेक्टेंगुलर प्लेट. देन सेंटर एट द ओरिजिन. सो कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं कि जिनकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग जो होती है वो इस हिसाब से होती है कि उसका जो सेंटर होता है उसको वो एज अ ओरिजिन कंसीडर करते हैं. या फिर अगर हम कंसीडर करते हैं दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, तो अगर यहां से स्टार्ट होता है देन इट इज द ओरिजिन एट द कॉर्नर. तो अगर आप यहाँ पे ओरिजिन एट द सेंटर नहीं है, यू कैन सिलेक्ट इट एज ओरिजिन एज द कॉर्नर. तो आपको यहाँ पे टिक नहीं करना है. देन नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है हिटेड बेड. सो बेसिकली हिटेड बेड क्या होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रिंट एनी मॉडल, हम जब फर्स्ट लेयर प्रिंट करते हैं तो फर्स्ट लेयर हमारा बेड के ऊपर प्रिंट होता है. तो वो मटेरियल बेड को स्टिक होना चाहिए. दैट इज वन ऑफ द पर्पस. तो वो स्टिक होने के लिए ये जरूरी होता है कि इफ बेड इज हैविंग एलिवेटेड टेम्परेचर,
it can get the material stick to it very easily. So that's why in some printer there is options available of a heated bed. So this option is not available in all the printers. If you are going to go for the low cost printer, there is no heated bed option is available. So if it is available at you, you are going to check it. Then these are the starting G code and end G code. So this in some printer, this code is been defined by the manufacturer itself. So as per your manufacturer, if this code is being given to you, that code you are going to add into the start and end model. So it depends on your manufacturer. Then these settings you are going to keep it as it is, and now we will go to the extruder. So extruder is nothing but the nozzle. जहां से आपका मटेरियल बाहर आने वाला है, that particular part is considered as a nozzle. Most of the standard printer come with the nozzle size of 0.4 mm. So if you are having relatively large size printer, then maybe you will having a larger nozzle size. But almost 70 to 80% of printer come with the nozzle size of 0.4 mm. देन मटेरियल मटेरियल की जो विड्थ होती है दैट स्टैंडर्ड इज 1.75 और 0.4 का जो नोजल होता है उसके लिए जो अवेलेबल रहती है दैट इज द 1.75 विच इज सुटेबल. तो आप जो पर्टिकुलर मटेरियल आप परचेस करते हो वहां पे स्टैंडर्ड साइज आपके बॉक्स के ऊपर लिखा होगा दैट यू आर गोइंग टू एंटर ओवर हियर एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन क्लोज. तो आपका यहाँ पे अभी प्रिंटर सेट हो चुका है. देन क्लिक ऑन क्लोज और इसको भी आपको क्लोज करना है. तो जैसे आपने प्रिंटर डिफाइन किया है उस हिसाब से यहाँ पे एक क्यूब जनरेट होगा जहां पे आपको मॉडल यहाँ पे अभी सेट करना है. सो हमने ऑलरेडी एसटीएल फाइल सेव की है. दैट एसटीएल फाइल वी आर गोइंग टू कॉल इनटू दिस सॉफ्टवेयर. सो यहाँ पे आपका ओपन ऑप्शन है. क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन. देन ब्राउज टू द फाइल. दैट 3D प्रिंटिंग की फाइल हमने स्टोर की थी एंड फाइल फॉर्मेट इज .stl. तो इतने सारे फाइल फॉर्मेट हम यूज कर सकते हैं बट मोस्ट सुटेबली जो यूज होता है दैट वाज द .stl फाइल फॉर्मेट. तो हम stl ले लेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन ओपन. सो stl फाइल आप किसी भी कैड मॉडल से भी जनरेट कर सकते हो या फिर यू कैन यूज अ 3D स्कैनर्स आल्सो. You might have heard about the CT scan. CT scan is nothing but the 3D scanner that you can also use. उसका जो आउटपुट फाइल रहेगी दैट फाइल यू कैन इंपोर्ट ओवर हियर आल्सो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इसको ऑपरेट करने के लिए इफ यू वांट टू रोटेट यू आर गोइंग टू प्रेस द राइट की ऑफ योर कीबोर्ड एंड यू कैन ड्रैग इट टू रोटेट. अब यहाँ पे देख सकते हो इसका इस हिसाब से ओरिएंटेशन आया है. सो ओरिएंटेशन यू हैव टू सेट इन अ सच ए वे दैट मिनिमम टाइप ऑफ पार्ट शुड बी ओवरहैंगिंग और whichever having a larger base should be at the bottom. अगर हम इसको कंसीडर करते हैं अब 3D प्रिंटर की एक प्रॉपर्टी होती है 3D प्रिंटर प्रिंटेड पार्ट जो होता है वो शेयरिंग में कमजोर होता है. मींस इट्स हैविंग द लेस स्ट्रेंथ इन द शेयरिंग because it is a layer by layered manufacture part. So if you apply the shear force over the part, the strength in shear direction is relatively less because दो पार्ट में जो एडिशन होता है उस एडिशन के डिपेंड वो करता है उस पार्ट की स्ट्रेंथ. तो हमारे नंबर ऑफ लेयर की हाइट जो होनी चाहिए वो कम से कम होनी चाहिए ये भी हमें देखना है. तो इस ओरिएंटेशन में क्या होता है कि हमारा यहाँ पे बेस बहुत कम मिल रहा है हमें. Then this is the overhanging part. Also, this whole thing is the overhanging part. So we will require relatively higher support material because अगर हम इसको directly print करेंगे और यहाँ पे अगर material release करते हैं and if there is a no support, that material is going to fall down. So if you are going to print any overhanging part, you will require the support. So you also have to think that the orientation of part is in such a way that overhanging material should be relatively less. So which parameter we have considered? The which is having the large number of base should be at the bottom. Overhanging part should be as less as possible and number of layers generated in the height should be relatively less. Or wherever in which direction we are requiring the higher strength should be in a vertically downward direction. तो
सबसे पहले अब हमें क्या देखना है कि इस साइड में इसका बेस सबसे ज्यादा है, सो वो बॉटम साइड में होना चाहिए। देन वन थिंग, हमें अब ये मॉडल कितने साइज का प्रिंट करना है आपने बना लिया है। इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट इट एज अ 1:1 साइज, यू कैन डायरेक्टली use it as it is. But if we are seeing whatever the 3D printing is used for rapid prototyping, so in the rapid prototyping it is not required that we always require the part of the same size. So we can print the reduced scale model also. So if you want to reduce its size, just select on the part and click on the resize. And scaling, now I am going to resize it up to the 70%. एंड यहाँ पे यूनिफॉर्म स्केलिंग आपकी ठीक है तो आपके मटेरियल का शेप चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन सेम एज इट इज। सो 70 या 80% पे मैं उसको सेट कर देता हूँ। नाउ आई वांट टू ओरिएंट इट। सो ओरिएंटेड के लिए आपका थर्ड ऑप्शन है रोटेशन, वो आपको सिलेक्ट करना है एंड इसको आपको रोटेट करना है बाय सिलेक्टिंग एनी एक्सिस अलोंग विच वी हैव टू रोटेट इट। सो वो एक्सिस पिक करके आपको रोटेट करना है। तो जब तक हमारा डिजायर्ड एंगल नहीं आ जाता, वी आर गोइंग टू रोटेट इट। सो 90 डिग्री से यहाँ पे रोटेट हो चुका है एंड मॉडल इज रेस्टेड ऑन दी ग्राउंड। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो आपका ओवर हैंगिंग पार्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका फोर्स अप्लाई करेगा। सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यू विल हैव अ गुड स्ट्रेंथ, बट इफ यू कंसिडर अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वर्टिकल एक्सिस, then it will be having relatively less strength. तो आपको हमेशा ये देखना है, your objective should be oriented in such a way that the maximum force is acting in vertical downward direction so that it will be safe in the working procedure. Now we have oriented it in a proper way. Now we are going to click on slice. So most of the settings are been pre-done over here. तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ सेटिंग सिलेक्टेड रहती है विच वी हैव नॉट मॉडिफाइड टिल नाउ। सो इट विल सेट सम सेटिंग बाय डिफॉल्ट एंड वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन स्लाइस। तो स्लाइसिंग में क्या होता है, इट इज गोइंग टू कट दैट मटेरियल। इट हैज एस्टिमेटेड that by this setting we are going to require 1 day and 27 minutes to slice this object, and we are going to require the 1.2 gram and 47.3 mm cube of material, length of material. So if you want to see a preview, that preview we can check. Okay, so you have to, यहाँ पे प्रिपेयर के साइड में प्रीव्यू ऑप्शन है, तो वो प्रीव्यू आप चेक कर सकते हो। या दिस इज अ vertical axis that gives you the number of layers. So you can see over here it is going to give the 832 layers. So 832 layers में हमारा ये ऑब्जेक्ट बनने वाला है। So if you reduce it, so you can see the actual process how it is going to work. So मैं यहाँ पे थोड़े से चेंज कर देता हूँ अभी यहाँ पे, and I click on, I will tell you it later on. Okay, now it is showing up 21 hours. So if we check this particular material, I am coming on the first layer and यहाँ पे आपका एक लेयर में क्या होता है वो एनिमेशन आपका ग्राउंड में दिखता है। So if I zoom it properly for clear visualization and I am going to play it. So यहाँ पे क्या दिखेगा कि आपका जो टूल यहाँ पे दिख रहा है वो टूल किस हिसाब से आपका रोटेट कर रहा है, that's what it is showing. So फर्स्ट लेयर में हमारा क्या होता है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। सो इट इज बिल्डिंग, नाउ यू कैन सी आपका जो बिल्ड हो रहा है वो पार्ट के साइड में हो रहा है। सो दिस प्रोसेस starts outside your part, because when you are going to lift that part you have to take this by the applying some force. So it may happen that the edges of the part may distort. That's why we are going to add a additional material outside, so that that external part which is not the part of our model, it may get distorted, plus it get the good hold on the base, because first layer in the printing of 3D printer is the most important, because addition to the plate
is one of the important thing. That's why it is going to be there. So वो साइड में कुछ पार्ट्स ऐड करेगा एंड देन इट विल स्टार्ट द एक्चुअल पार्ट. तो एक्चुअल पार्ट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप वो zigzag फॉर्म में पार्ट प्रिंट कर रहा है. सो दिस इज नथिंग बट यूर फर्स्ट लेयर. सिमिलरली आपका सेकंड लेयर होगा, थर्ड लेयर होगा और वो जो बॉक्स होगा वो ऊपर आते जाएगा. इस हिसाब से हमारा पार्ट यहाँ पे बिल्ड होते जाएगा. नाउ वी हैवंट अप्लाइड एनी सपोर्ट इन दिस मटेरियल, सो दिस पार्ट इज बीन डेवलप्ड विदाउट सपोर्ट. बट व्हेन वी प्रिंट एनी मटेरियल ओवर हियर, दैट मटेरियल इज कैनॉट बी प्रिंटेड डायरेक्टली. सो वहां पे आपका मटेरियल नीचे फॉल हो जाएगा. That's why we are going to select the support over here. So for the additional setting you have to click over here और यहाँ पे आपको जाना है सपोर्ट में. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सिंपल सेटिंग रिकमेंडेड में जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन है सपोर्ट. जब आप सपोर्ट सिलेक्ट करते हो एंड यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन स्लाइस. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच में मटेरियल ऐड हो चुका है एज वेल एज यहाँ पे जो ओवरहैंगिंग मटेरियल था उसके नीचे भी एक एडिशनल मटेरियल ऐड हो चुका है. सो हम यहाँ पे अगर प्रीव्यू में देखते हैं, सो फर्स्ट लेयर में यहाँ पे देखो ये साइड का मटेरियल ऐड हो गया विच इज गोइंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर दिस ओवरहैंगिंग पार्ट. तो जैसे जैसे हम एक लेयर ऊपर आते जाएंगे, अब मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ. यहाँ पे देखो जहां पे सपोर्ट आपको दिया हुआ है, सपोर्ट में यहाँ पे देखो जिगजैग में आपकी जो ड्राइंग है वो ड्रॉ हुई है. तो मटेरियल इसने यहाँ पे जो ऐड किया हुआ है, इट यूजेस द मिनिमम नंबर ऑफ मटेरियल, सो दैट बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल पार्ट. वो तो हमें वैसे भी जो सपोर्ट मटेरियल है वो हमें ब्रेक करना है एंड वी हैव टू टेक इट असाइड फ्रॉम आवर पार्ट. सो इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है. सो सॉफ्टवेयर ट्राई टू रिड्यूस द मटेरियल यूज्ड फॉर दैट पर्पज. सो वो आपका कम हो जाता है. देन यहाँ पे बीच में देखो, यहाँ पे हमारा तो नीचे का बेस प्लेट था, तो बेस प्लेट में भी उसने जिगजैग फॉर्म में आपका मटेरियल ऐड किया हुआ है. तो इसको हम बोलते हैं इनफिल. तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन दिया हुआ है इनफिल. इट इज स्वेट टू द 20%. तो आपको टोटल अगर आपने पूरा का पूरा मटेरियल वहां पे फिल करते हो तो उसके लिए जितना मटेरियल लगेगा उसका 20% मटेरियल सिर्फ वो वहां पे ड्रॉप करता है. तो जो भी आपका इंटरनल पार्ट रहेगा, दैट इंटरनल पार्ट will be always filled as the infill of and it will use the least amount of material. अगर आपको कुछ ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए यू कैन इंक्रीज दिस. अगर मैंने इसको 40 पे कर लिया एंड आई विल क्लिक ऑन स्लाइस. अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रिडिंग थी बीच में वो थोड़ी सी कोर्स हो चुकी है. मीन्स इट हैज डबल इट्स ग्रिड, मतलब ग्रिड की साइज आपकी हाफ हो चुकी है एंड मटेरियल आपका डबल हो रहा है. तो वो चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. तो ये आप मिनिमम भी कर सकते हो उससे कम. अगर आपको डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए चाहिए यू कैन रिड्यूस द इनफिल. अब यहाँ पे देखो हमारा इनफिल कोर्स हो चुका है, तो उस हिसाब से आप इनफिल का परसेंट चेंज कर सकते हो. देन यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन है लेयर हाइट. नॉर्मली आपको लेयर हाइट लेनी है. हमारी नोजल साइज कितनी थी 0.4, तो आपकी लेयर हाइट 0.4 से ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि आपकी जो नोजल है उस नोजल से ऊपर आपका मटेरियल कभी भी प्रिंट नहीं हो सकता. तो आपका मैक्सिमम जो लेयर हाइट होगा वो 0.4 के ऊपर ही हम आपको स्टिक करना है एंड मिनिमम विल भी आपको रखना है 0.1. बहुत फाइन करना है तो 0.06 इज अवेलेबल, बट फॉर हाई क्वालिटी प्रिंटर 0.06 is suitable. Otherwise, if you want a good finish, you are going to set the 0.1. If you want the fine finish, you are going to set the 0.2, 0.3, and if you want just the demonstration purpose, you are going to set a 0.4. So ये जो आपका लेयर हाइट होता है, it is going to affect the time most. स्लाइस करने के लिए हमने पहले देखा कि था हमारा जो प्रिंटिंग टाइम था वो 1 डे था.
Now if you set the layer height to be 0.4 and we are going to check the slice, तो यहाँ पे देखो वो 1 डे से 7 आवर तक रिड्यूस हो चुका है एंड यू कैन सी द प्रिंट. यहाँ पे देखो आपको लाइन 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 विजिबल हो रहा है. तो सेम टाइप ऑफ लाइंस विल बी विजिबल टू योर पार्ट इफ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द लार्जर लेयर हाइट. अगर आपकी लेयर हाइट ज्यादा रहेगी तो आपको पार्ट विजिबल होगा कि ईच एंड एवरी लेयर इज डिफरेंट दैट यू कैन सी बाय योर नेकेड आइज. If it is very small, you cannot identify the layer separately. So it depends on the printer quality again. Now these are the basic things. So if you are going to go into the advanced thing, you are going to go to the custom. अब यहाँ पे कस्टम में आप देख सकते हो फर्स्ट वन इज अ क्वालिटी दैट लेयर हाइट. तो लेयर हाइट आपकी मैक्सिमम 0.4 तक जा सकती है. यहाँ पे आप 0.3 सिलेक्ट कर सकते हो, 0.2 और 0.1. जब आप यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे देखो लेयर हाइट पे लिखने के बाद ब्लैक कलर में आपको इंफॉर्मेशन शो हो रही है. इट गिव्स यू कि उसका क्या डिफरेंस आने वाला है वो वहां पे बताता है. तो वो हो गया क्वालिटी कि एक लेयर की हाइट हमारी कितनी होनी चाहिए. अब यहाँ पे देखो, अब जब हमने लेयर हाइट 0.4 रखी है, 0.4 पे देखो उसने कलर चेंज कर लिया है. यहाँ पे मैं अगर 0.5 रखता हूँ या फिर 0.9 कर देता हूँ, उसने कलर उसने ऑरेंज इसमें दिया हुआ है दैट इट इज नॉट अ सुटेबल हाइट. बट इफ यू गिव इट एज अ 0.3 तो वहां पे देखो वो कलर चला गया बिकॉज 0.3 विल गिव यू द good type of surface finish. That's why it is most suitable that you should print it between the 0.1 to 0.3 if you are having the nozzle of 0.4. Then next thing is a shell. So shell में क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन है वॉल थिकनेस. तो वॉल थिकनेस अभी दिया हुआ है 0.8. सो वॉल थिकनेस हम चेक कर लेते हैं क्या होता है. सबसे पहले यहाँ पे 0.8 है, तो 0.8 के लिए हम इसको स्लाइस करके देखेंगे. ठीक है, हम इसको नीचे लेके जाते हैं. नाउ यू कैन चेक ओवर हियर कि इसके जो कॉर्नर आपको दिख रहे हैं, मैं आपको प्रॉपरली जूम करके दिखाता हूँ. वो यहाँ पे एजेस पे देखो, आपका एजेस पे एक लेयर स्ट्रेट जा रहा है, सेकंड लेयर स्ट्रेट जा रहा है. सो आपकी जो वॉल थिकनेस है वो 0.8 है और हमारी नोजल कितनी है 0.4 की. तो वो यहाँ पे वॉल के 2 लेयर बनाता है कि आपके वॉल के 2 लेयर रहेंगे एंड उसके अंदर आपका इनफिल स्टार्ट होगा. सो दैट्स व्हाट द सेटिंग इज गिवन फॉर कि व्हाट wall thickness you required. So if you want your part to be solid or which is having a good strength, you have to increase the wall thickness. But wall thickness जब आप बढ़ाते जाओगे, it should be in multiples of your nozzle diameter. हमारा nozzle diameter कितना है 0.4. तो आपकी वॉल थिकनेस 0.4 हो सकती है, 0.8 हो सकती है, 1.2 हो सकती है, 1.6 हो सकती है. ओके, या फिर हमारी 2 हो सकती है. सो वो आपका हमेशा क्या रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर वॉल नोजल डायमीटर के इन टर्म्स ऑफ होना चाहिए. सो 0.8 या फिर 1.6 या फिर 1.2 आप लिख सकते हो. तब यहाँ पे देखो कि वॉल के कितने लाइन काउंट रहेगा वो आप नीचे काउंट करके देता है. तो 1.6 है तो 0.4 इंटू 4 1.6, तो यहाँ पे हमारे टोटल काउंट 4 आएगा. अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो नीचे काउंट देखो 5 हो गया. बट यू कैनॉट सेट इट एज अ 1.8. अगर आप 1.8 करोगे तो वो आपको एक देगा कि सेम काउंट यू कैनॉट एक्चुअली क्रिएट. सो यू हैव टू मेक इट इन टर्म्स ऑफ नोजल डायमीटर. सो यहाँ पे मैंने 2 सेट कर लिया एंड नाउ अगेन आई विल क्लिक ऑन स्लाइस. अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 वॉल लेयर उसने जनरेट कर लिए. तो जितने आपकी वॉल थिकनेस ज्यादा रहेगी उतने आपके लेयर ज्यादा बढ़ेंगे. सो दैट वाज द वन प्रॉपर्टी दैट इज अ वॉल थिकनेस. नेक्स्ट इज अ टॉप एंड बॉटम थिकनेस. अब टॉप एंड बॉटम थिकनेस क्या होता है वो देख लेते हैं. अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितना सेट किया हुआ है, टॉप एंड बॉटम इज 1.2. अब
ये भी आपका डिपेंड रहेगा आपकी लेयर हाइट के ऊपर। अब लेयर हाइट हमने 0.3 सेट की है, तो इन टर्म्स यू कैन सिलेक्ट द वॉल थिकनेस। अगर 0.3 है तो आप यहाँ पे मे बी यू कैन सेट इट एज अ 0.9। तो यहाँ पे वो देखो, टॉप लेयर कितने बनाएगा, 3 बनाएगा, बॉटम लेयर कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। तो दैट्स डिपेंड, वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपकी लेयर हाइट कितनी रहती है वो। अगर मैं यहाँ पे 2 सिलेक्ट कर देता हूं, तो अब मुझे ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तो अगर मेरी लेयर हाइट 2 है, तो मेरा टॉप बॉटम इन टर्म्स ऑफ 0.2 होना चाहिए, सो आई कैन सेट इट 1। अगर 1 सेट करता हूं तो 1 के हिसाब से 0.2 लेयर में कितने आपके लेयर बनेंगे, बॉटम के 5, टॉप के 5। तो उस हिसाब से हमें डील करना है। तो इफ आई एम गोइंग टू कीप इट एज अ 0.3, आपका जो बॉटम एंड टॉप आना चाहिए वो इट शुड बी इन मल्टीपल ऑफ 0.3, सो 1.2। एंड दैट वी आल्सो कैन चेक। अगेन वी विल क्लिक ऑन स्लाइस। आपको जो भी सेटिंग चेंज करोगे उसके बाद स्लाइस करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे देखो, आपका जो लेयर है वो बढ़ाते जाता हूं। अब यहाँ पे चेक करो, एट द लेयर ऑफ 49 we are having a grid, that is the infill shown over here. I go for the 50। अब यहाँ पे 50 पे देखो, 50 पे क्या हुआ है, अब इसने जो स्टार्ट किया है, अब यहाँ पे इनफिल आपकी खत्म हो चुकी है, एंड नाउ इट विल स्टार्ट फिलिंग द एक्चुअल मटेरियल। तो यहाँ पे देखो वो इनफिल को पूरा क्लोज कर रहा है, एंड देन इट इज गोइंग टू फिल द लेयर कंप्लीटली। तो यहाँ पे उसने क्या बनाया, इट क्रिएटेड अ टॉप वॉल। तो ऐसे टॉप वॉल हमने कितने रखे हुआ है, 0.3 लेयर के 4, सो 50, 51, 52 एंड 53, वहां तक आपका होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी उसने टॉप वॉल बनाया। अब यहाँ पे देखो, वो एक लेयर उसने इस एंगल में बनाया है, ऊपर का लेयर इस एंगल में बनाया है, सो दैट यू विल नॉट सी एनीथिंग ट्रांसपेरेंट। अगर सेम लेयर में वो फिर से बनाते जाएगा तो कुछ चीजें ट्रांसपेरेंट हो सकती है, बट ड्यू टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फिलिंग मटेरियल विच गिव यू द मोर सॉलिड व्यू। तो ये हमारा 53 लेयर हो गया। इफ यू चेक फॉर द 54, 54 or 55, now you can see there is no in between material, but there is a supporting, so बीच में उसने support start किया है, तो that it has started। और यहाँ पे देखो, ये आपका पूरा ऊपर जा रहा है, इसलिए again here is a infill, तो that is what is given। तो इस हिसाब से आपका ये 55th लेयर आएगा। तो that setting is given over the shell, that is the top and bottom thickness that you have to set, but you have to just remember it should be in terms of your layer height। then next thing is the infill। तो शेल हो गया हमारा, क्वालिटी हो गया, नाउ इनफिल। अब यहाँ पे देखो, इनफिल हमारी 10% के ऊपर सेट है, एंड द पैटर्न इज जिगजैग। तो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, दिस पैटर्न इज नथिंग बट अ जिगजैग पैटर्न। तो वो पैटर्न भी हम चेंज कर सकते हैं कि हमें किस हिसाब से चाहिए। इफ आई वांट इट टू बी अ ग्रिड, तो वहां पे ग्रिड सिलेक्ट कर लो एंड क्लिक ऑन स्लाइस। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न उसने चेंज कर लिया है। तो इंस्टेड ऑफ zigzag, नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग अ ग्रिड टाइप ऑफ इनफिल। सो इफ आई वांट टू चेंज इट्स परसेंटेज, कि मुझे अगर ये लग रहा है कि ये बहुत एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, माई पार्ट विल नॉट गेट दैट मच strength, so I will keep it 20, and again I will click on slice। तो यहाँ पे देखो, आपका जो ग्रिड था वो थोड़ा सा फाइन हो चुका है। तो डिपेंड ऑन क्वालिटी यू रिक्वायर्ड, यू आर गोइंग टू सी द डेंसिटी एंड द टाइप ऑफ पैटर्न यू रिक्वायर्ड फॉर द इनफिल, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ पैटर्न, यू कैन चेक इट विच इज मोर सुटेबल फॉर योर मटेरियल और योर पार्ट। देन यू आर गोइंग टू सिलेक्ट द मटेरियल। अब मटेरियल का यहाँ पे प्रिंटिंग टेम्परेचर होता है और बिल्ड प्लेट का टेम्परेचर होता है। तो आपका बिल्ड प्लेट का जो टेम्परेचर रहेगा, इट विल बी सजेस्टेड बाय द
मैन्युफैक्चरर, आपका जो प्रिंटर का मैन्युफैक्चरर रहेगा वो उसकी एक रेंज सेट करके देगा, एंड अकॉर्डिंग टू योर एडेशन आपको ये थोड़ा बहुत वेरी करके देखना पड़ेगा बिटवीन 50 to 70 कि किस टेम्परेचर के ऊपर आपका मटेरियल अच्छे से स्टिक हो रहा है. इट इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड, आप उस हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो. एंड देन प्रिंटेबल टेम्परेचर. अब प्रिंटेबल टेम्परेचर आपका डिपेंड होता है विच मटेरियल यू आर गोइंग टू यूज. सो बेसिकली एफडीएम प्रोसेस में दो मटेरियल रहते हैं. फर्स्ट वन इज अ पीएलए मटेरियल एंड सेकंड वन इज अ एबीएस मटेरियल. तो नॉर्मली पीएलए का रेंज जो होता है वो 190 से 200 तक होता है, एंड एबीएस मटेरियल 200 से 220 तक होता है. अगेन देयर आर सम वेरिएशन डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर कि आपने जो मटेरियल परचेस किया है उस बॉक्स के ऊपर उसका प्रिंटिंग टेम्परेचर स्पेसिफाई रहता है, वो टेम्परेचर आप यूज कर सकते हो. एंड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ योर प्रिंटिंग, आपको जो क्वालिटी आपकी आ रही है उस हिसाब से आप टेम्परेचर थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हो बेस्ड ऑन ट्रायल एंड एरर मेथड. So best suitable is a 200. You can change it as per your requirement of the material. Next is the speed. अब हेलो speed में, yes, सर, ये पीएलएस और एबीएस मटेरियल का फुल फॉर्म क्या है सर? PLA is a polycarbide. Just we will give you the long form, that is the PLA. So PLA is PLA material. So PLA is nothing but the polylactic acid. So this is the material. So the abbreviation is most commonly used. If you just search on the PLA material, you will get it on Amazon also. 1 kg का उसका रोल आता है. Both are the ABS stand for the acrylonitride butadiene sterylene. That is stand for the ABS. So these are the just different structure. Both are the both the plastic material, and both are the semi-solidified when it is been raised to the temperature of the 190 to 1210 degrees Celsius. देन नेक्स्ट इज अ प्रिंटिंग स्पीड. अब प्रिंटिंग स्पीड आपका बाय डिफॉल्ट 50 पे रहता है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो अभी भी स्लाइसिंग टाइम है वो 12 आवर है. तो अगर हमें इतना ज्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना है, वी कैन इंक्रीज द प्रिंटिंग स्पीड. सो इफ वी सेट द प्रिंटिंग स्पीड टू द 70 एंड वी विल जस्ट स्लाइस. तो यहाँ पे देखो सिग्निफिकेंटली हमारा टाइम ऑफ द प्रोड्यूस हमारा कम हो चुका है, जितना टाइम लगने वाला है. बट अगेन यू हैव टू चेक विथ योर प्रिंटर. आप एक दो प्रिंट निकाल के देखो, अगर एलिवेटेड स्पीड के ऊपर भी वो आपको डिजायर्ड क्वालिटी दे रहा है, देन एंड ओनली देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड. अदरवाइज आपका मटेरियल फ्लो जो हो रहा है अगर वो कम पड़ जाता है, देन इट विल ब्रेक इन बिटवीन. आपके जो लेयर रहेंगे वो इन बिटवीन में कुछ मटेरियल स्किप कर लेगा, and you will not get the good quality. So based on you have to select the material. Next is a travel. तो ट्रैवल में क्या होता है, यहाँ पे देखो इनेबल रिट्रैक्शन दिया हुआ है एंड Z ऑफ व्हेन रिट्रैक्टेड. तो ये क्या होता है कि आपका टूल यहाँ पे देखो जब एक जगह से दूसरी जगह पे, मतलब उसने ये पैटर्न कंप्लीट कर लिया और उसको यहाँ से स्विच करके यहाँ तक जाना है, तो वो जेड हॉप मतलब जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा ऊपर जाएगा और देन इस साइड में जाएगा. तो वो किस लिए यूज होता है कि अगर यहाँ पे इन बिटवीन कुछ मटेरियल है तो इट मे हैपन दैट आपकी नोजल जो नीचे के मटेरियल के साथ टच होके उस मटेरियल को वो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है. तो दैट्स व्हाई द रिट्रैक्शन इज नीडेड व्हेन टूल इज बीन ट्रेवल फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन व्हेन इट इज नॉट प्रिंटिंग. जब वो प्रिंट नहीं कर रहा है और उस वक्त वो जब ट्रैवलिंग कर रहा है तब वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड देन सेकंड पोजीशन के ऊपर जाएगा. दैट इज नथिंग बट द ट्रैवल. नेक्स्ट इज अ कूलिंग. तो कूलिंग में क्या होता है कि ये मटेरियल जब आप एलिवेटेड टेम्परेचर मींस 200 डिग्री पे आप नोजल पे उसको हीट कर रहे हो एंड इट सेमी सॉलिडिफाइज. तो और जब वो मटेरियल आपका डिपॉजिट हो जाता है, वी रिक्वायर्ड इट टू कूल एट द फास्टर रेट. तो कुछ प्रिंटर के ऊपर आपको फैन प्रोवाइड किए होते हैं
at this side of your nozzle. नोजल के साइड में आपका फैन अवेलेबल रहता है. तो अगर आपको कूलिंग वो चाहिए टू इमीडिएटली कूल डाउन दैट पर्टिकुलर मॉडल, देन यू आर गोइंग टू टर्न इट ऑन, और फैन का स्पीड आप परसेंटेज में यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो. नेक्स्ट थिंग इज अ सपोर्ट. तो सपोर्ट आपको चाहिए नहीं चाहिए वो आप आपके हिसाब से चूज कर सकते हो. अब जहां पे भी आपका ओवर हैंगिंग पार्ट रहेगा, देयर यू आर गोइंग टू रिक्वायर द सपोर्ट ऑलवेज. ओवर हैंगिंग पार्ट विदाउट सपोर्ट कभी भी प्रिंट नहीं हो सकता है. तो जहां पे आपका टचिंग बिल्ड प्लेट है वहां पे आपको चाहिए या फिर ओवरऑल चाहिए, दैट यू कैन चूज. ठीक है. अब इसने क्या किया, जो डायरेक्टली ओवर हैंग था वहां पे उसने सिर्फ सपोर्ट दिया, बीच में नहीं दिया. ठीक है. तो इस हिसाब से आप चूज कर सकते हो, बट आपको देखना है कि अगर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं तो ये जो बीच में पार्ट है, इट इज अ ओवरहैंगिंग पार्ट एंड इट कैनॉट प्रिंट इट. सो इन अवर केस वी रिक्वायर द सपोर्ट एवरीवेयर. ओके. बट अगेन हाउ यू आर गोइंग टू चूज इट, कि अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पे देखो हमारा स्लैंटेड पोर्शन है, ये मटेरियल रिड्यूस होते गया है. इफ वी आर हैविंग समथिंग, आपका मटेरियल अगर इंक्रीज होते जाता है इस डायरेक्शन में, सो इफ दिस डायरेक्शन और एंगल ऑफ योर इंक्रीज इन द मटेरियल, इफ इट इज above 45 degree, you are going to require the support. If it is less than 45 degree, it can be printed without support. Now again this angle is depend on your manufacturer. Some advanced printer or high cost printer come with the maximum angle up to 60 degree also. That up to 60 degree it can accommodate. And it also depend on your mode setting, that is known as the layer height and your shell thickness. Means यहाँ पे अगर आपकी layer height अगर कम है, means 0.1 है, तो you can take a more angle. If your layer height is large, then you can convert the less angle, because एक लेयर में आपकी जो थिकनेस होती है वो तो आपकी लेयर के एक इसकी थिकनेस, लाइन की थिकनेस हमेशा 0.4 ही रहने वाली है. तो अगर आप ये 0.1 से करते हो तो मोर इंक्लाइन ऑब्जेक्ट यू कैन प्रिंट विदाउट सपोर्ट. तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा ये. नेक्स्ट इज अ बिल्ड प्लेट एडेशन. तो बिल्ड प्लेट एडेशन क्या होता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा कि आपके प्लेट के बाहर कुछ एरिया ड्रॉ हुआ है बाय डिफॉल्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ बिल्ड प्लेट एडेशन. तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्रिम है, तो उसको आप स्कर्ट सिलेक्ट कर सकते हो. यू कैन क्लिक ऑन स्लाइस. तो यहाँ पे देखो साइड में चेंज हो चुका है. यहाँ पे सिर्फ आउटर लाइन उसने प्रिंट की लेकिन उसको अटैच नहीं किया. तो ऐसे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है विच यू कैन चूज. तो यहाँ पे क्या होता है कि वो साइड में सिर्फ आपका पार्ट एक बार टेस्ट कर लेता है एंड देन इट इज गोइंग टू स्टार्ट द एक्चुअल, कि वो चेक कर रहा है लेता है कि वो प्रॉपरली स्टिक हो रहा है या नहीं हो रहा. जब आप ब्रिम करते हो, ब्रिम तो हमने पहले से देख लिया है, वी विल सी अ राफ्ट एंड क्लिक ऑन स्लाइस. राफ्ट में देखो उसने ये ब्रिम में सिर्फ हमारा एक लेयर हो रहा था, यहाँ पे देखो 1 2 3 लेयर उसने ड्रॉ किए है. सो दिस इज नथिंग बट राफ्ट. सो इस हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड प्लेट एडिशन, मतलब प्लेट में वो प्रॉपरली स्टिक होना चाहिए. अब ये कब यूज होगा, जब आपका बेस रिलेटिवली स्मॉल है एज कंपेयर टू हाइट, तो उस वक्त आपको राफ्ट की जरूरत पड़ेगी, सो दैट इट विल गिव अ प्रॉपर सपोर्ट टू द पार्ट. एंड लास्ट वन इज अ ड्यूअल एक्सट्रूजन. अब ड्यूअल एक्सट्रूजन तब काम में आता है इफ यू आर हैविंग अ टू नोजल present at your printer. Now printer I have selected which is having only single nozzle, that's why इसकी setting यहाँ पे appear नहीं हो रही है. So if you are having that kind of printer, then in maximum thing one nozzle is used for the actual material and one nozzle is used for the support material. So if you are having the both material separate, then आपका जो सपोर्ट मटेरियल होता है उसकी क्वालिटी कम रहती है एंड इट कैन इजीली ब्रेक. तो उस हिसाब से आपका डिफरेंट रह सकता है, या फिर सम प्रिंटर सपोर्ट द
two materials simultaneously which is having a different color and etc. So that can be done in the dual extrusion setting. Okay, so these are the basic settings which are available in a 3D printing, so that you can test. तो बेस्ड ऑन दैट आपका प्रिंटर का साइज हो जाएगा। जब हम इसको सेव करेंगे, कंप्लीट होने के बाद आपने सारे प्रॉपर सेटिंग कर लिए हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन सेव टू द फाइल। तो मैं इसको एक फाइल में सेव कर लेता हूं माय डॉक्यूमेंट में, जिसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जी कोड। यहाँ पे मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूं, यहाँ पे किस हिसाब से 8888, तो माय फाइल इज, दिस इज माय जी कोड। सो इफ आई ओपन इट, अगर मैं इसको नोटपैड में अभी यहाँ पे ओपन कर लेता हूं, सो यू कैन सी ऑल दीज आर एम कोड and these are G code. So all the G code with the coordinate has been generated. तो आपको टूल को किस हिसाब से मूव होना चाहिए? If you see it, it is a very large program. So such program we cannot do it manually. We have to use a software. So this large program is been generated by the software, and this file we are going to transfer to your memory card, and that memory card is attachable to the printer. If you are having an advanced printer, it directly comes with the USB connection, and if that USB is connected to your uh, PC, you can directly here option come as the print the file. So it depends on your printer setting, or otherwise you save that part, transfer it to your memory card, attach your memory card to the 3D printer, and start the printing on the printer. So if you are having any doubt, you can ask. हेलो Yes. सर, वो जो हमने सपोर्ट दिया था हाँ. ड्यूरिंग द डिजाइन, तो Yes. सर जब हम फाइनल पार्ट जब कंप्लीट हो जाता है तो वो सपोर्ट हमें रिमूव करना रहता है, तो क्या उसके हाँ. लिए आफ्टर फिनिशिंग रिक्वायर्ड रहती है सर? जब हम एफडीएम की अगर बात देखें, तो एफडीएम में हम सिंपली स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स हम अप्लाई कर देते हैं, तो वो जो सपोर्ट होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या रहता है, जब हमारा सपोर्ट स्टार्ट होता है, यू कैन सी यहाँ पे देखो, इसके ऊपर हमारा सपोर्ट स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि नीचे का मटेरियल की जो आपका प्रोफाइल है वो अलग है, और ऊपर की प्रोफाइल जो है वो अलग है। तो ड्यू टू चेंज इन प्रोफाइल, इट इज इजी फॉर इट टू ब्रेक एट दैट पॉइंट, एंड द मटेरियल अवेलेबल फॉर द सपोर्ट इज वेरी वेरी लेस, तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है। सो इन केस ऑफ एफडीएम वी जस्ट रिक्वायर्ड द स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ओनली, and in if we go for the powder type of things, then the support material is having a different property, and we just dip that particular part in some solvent. तो जो सपोर्ट मटेरियल होता है वो उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, एंड वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग, वी हैव टू जस्ट दैट टेक दैट पार्ट आउटसाइड एंड द सपोर्ट इज गॉन। ओके सर। सर कुछ सपोर्ट मटेरियल्स के नाम बता सकते हैं? नहीं, सपोर्ट एफडीएम में सपोर्ट मटेरियल आपका अलग रहेगा ही नहीं, इट विल बी द सेम मटेरियल। ओके ओके। उसमें आपका अलग सपोर्ट नहीं रहता है, सेम मटेरियल का रहता है बस, बट उसका थिकनेस कम रहता है, उसमें मटेरियल कम यूज होता है, सो इट ब्रेक्स इजीली बिकॉज इट इज हैविंग अ डिफरेंट टेक्सचर। सो यू डोंट रिक्वायर द डिफरेंट मटेरियल एज अ सपोर्ट मटेरियल। ओके सर। यस। एनी मोर क्वेश्चंस? So I will just add a feedback form to you in the chat box itself, so you have to just have to fill that feedback form, and the certificate you will receive immediately. सर वन जनरल क्वेश्चन। Yes. सर ये जो 3D प्रिंटिंग्स है, इसकी इंडस्ट्रीज हमें जनरली इंडिया के किस कौन से रीजन में देखने को मिलते हैं सर? ओके, 3D प्रिंटर की नॉर्मली है ना, बैंगलोर साइड में ज्यादा है, जो दैट मैन्युफैक्चर द 3D प्रिंटर, बट 3D प्रिंटर इज नॉर्मली नाउ अवेलेबल इन ऑलमोस्ट in each and every city. If you consider any city, in Nasik, even in Nasik at the NEC,
we are having a two type of 3D printer. One is a FDM and other one is a metal printer. So these are available, and even in 2-3 colleges in Nasik, the 3D printer is also available. Okay, sir. Thank you. So within the 2 minutes, I will share the feedback form with you in the chat box. So don't leave the meeting. Hello, sir. Yes. Yes, please send the link of feedback, sir. Actually, I missed it. Yes, yes, I am going to send it within 2 minutes. So in the chat box, the link is available. Just fill that form and you will get the certificates also on your mail. So thank you everyone for attending this 3 days workshop. I hope you have gained some knowledge and you can use it in your project work or etc. for all the students. Thank you everyone for attending this workshop. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir.